बेटा हेलो हेलो शुरू करो आंगुल लिखिए वेलकम स्टूडेंट I am Arup Mukherjee one of the math mentors from BookmarksEducare. So today's topic is to discuss about ICSE and CBSE questions paper, okay, and in which both of them we are going to discuss only MCQ type questions, okay, only first part of CBSE class 12 and 12 board question paper 2025 लास्ट ईयर, ओके, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो था लास्ट ईयर का, मतलब 2008 चल रहा है, सो 2025 का क्वेश्चन पेपर ओनली MCQ type, okay, will be discussed, and also we are going to discuss about ICSE 2025 MCQ type question, okay. So let's start. We are going to start with CBSE class 12 2025 65 set 2, okay, set 2, clear. So we are discussing about the question about MCQ type question in set 2. So first question, first MCQ type, first part, okay, first part, question number 1, what is given? Study the given graph दिया हुआ है, it illustrates this. So what type of graph it is? We have to identify what type of graph it is. So first of all, अगर हम B ले लेते तो क्या होगा? cos x का y is equal to cos inverse x, इसका डोमेन क्या है? 0 to pi, okay, and so does not, and this is decreasing, and it is decreasing function, so does not match with this graph, so ये नहीं होगा. sin inverse y is equal to, अच्छा पहले y is equal to sec inverse x, so इसका डोमेन क्या है? सो R, ठीक है, इसको छोड़ के मतलब डोमेन एक्सक्लूड्स दिस वैल्यू, सो इट ऑल्सो डज नॉट फुल्ली मैच, सो ये भी नहीं होगा. अब साइन इनवर्स एक्स का सो डोमेन रेंज दिया हुआ है, ये है. सो एंड इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ होगा
एस टाइप का ग्राफ नहीं होगा, ये एस टाइप का ग्राफ साइन इनवर्स एक्स एस टाइप का ग्राफ. So the graph of sin inverse x will not be S type of graph which is given and does not have vertical tendency to plus minus 1 near plus minus 1. Okay, so it will not be the right choice. Now A will be the right choice because tan inverse का जो ग्राफ है इसका रेंज एंड डोमेन इसका रेंज एंड डोमेन भी क्या है, सॉरी एंड रेंज डोमेन दिया हुआ है. सो इसका कर्व भी इस टाइप का है, क्लियर, एंड वर्टिकली इंटेंड्स टू प्लस माइनस पाई बाई 2. ओके, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, क्लियर. दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to tan inverse x. So now next question, if 2x minus 1 is equal to 2x minus 1 3x 0 y square minus 1 is equal to x plus 3 12 0 35. So we have to find out the value of x minus y. So equating 3x is equal to 12, so x का वैल्यू क्या होगा 4 हो जाएगा, and equating just corresponding equating on both sides corresponding elements in the matrix. Okay, so y square minus 1 is equal to 35, so y square is equal to 36, so y is equal to plus minus 6. Clear? So x minus y, x 4 ले लेते हैं और y 6 plus 6 ले लेते हैं, so minus 2 होगा. when x तो as it is, x remain constant because x के एक की वैल्यू निकल यहां पर निकले हुआ है, so 4 होगा प्लस y का वैल्यू माइनस अगर 6 ले लेते तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस हो जाएगा प्लस 6, so 10. So minus 2 to 10. So right option is B. Next question of the first part, मतलब MCQ टाइप का फर्स्ट पार्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन. Let A be a square matrix of order 3 and determinant of A is equal to 5. So we have to find out determinant of adjoint of A, ये वाला निकले बोला है. तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला so adjoint determinant of adjoint A is equal to determinant A whole to the power n minus 1, where n is order
of the matrix. Okay, so now डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है यहाँ पर 5, और ऑर्डर क्या है, M3 है, ऑर्डर 3 है, सो 3 टू द पावर 5 टू द पावर 3 माइनस 1, सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो 25 होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर. ओके, next sum. Determinant of A is equal to 3, determinant of B is equal to 5, and अगर कोई मैट्रिक्स, सपोज M is a matrix, ठीक है, K is a scalar, SCALAR scalar और M matrix. So and order is equal to, अगर 3 दिया गया सो क्या होगा, K क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला है. सो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 है, सो 2 क्यूब इंटू determinant of A into determinant of B is equal to 8 into determinant of A, 3 into determinant of B matrix is 5, so 120. So B is the right option. सो यहां पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉट इक्वल. सो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल को सेम होना पड़ेगा, तो यहां पर सेम नहीं है, सो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा. फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, principal diagonal element should be 1. so यहाँ पर 1 भी नहीं है, so A भी नहीं होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होगा. नल मैट्रिक्स के लिए all the elements should be 0. so principal diagonal element 0 नहीं है, so A भी नहीं होगा. so अगर इसको A मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो एक ही सेम मैट्रिक्स आएगा. सो दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए जो कंडीशन है, देखो ए ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करने से क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग रो मस्ट बी कन्वर्ट ट्रांसफर मस्ट बी ट्रांसपोज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग रोज. ओके, सो 0 0 0, ए भी घुमा दो, सो सेम ही आ रहा है. सो ये क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. क्लियर. सो सेकंड 6 नंबर, व्हाट इज द टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 with each entry √2 or √3. so 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का कितना एलिमेंट होगा, 9. सो देखो
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So for each element either यहाँ पर √2 बैठेगा और √3 बैठेगा. So option for each element, each term is 2 element. Okay, so either यहाँ पर √2 हम लोग बैठा सकते हैं और √3 भी बैठा सकते हैं. तो we have 2 option for each term in the matrix, and total element in this matrix is 9 because this matrix is 3 by 3 order of matrix. Clear? So total choice क्या होगा? For each term there are 2 choices of element. 2 entity होगा, 2 entry होगा, ठीक है, एक √2 और एक √3. So total number of possible matrices can be formed 2 to the power 9. Okay, so 5, 1, 2 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 1, 2 मिलेगा. B is the right option. Clear? Now domain of f of x, 7 नंबर क्वेश्चन है ये. डोमेन ऑफ cos इनवर्स x. cos इनवर्स x का डोमेन क्या है? cos इनवर्स x का डोमेन है -1, 1. सो cos इनवर्स x का डोमेन DOMAIN, डोमेन ऑफ cos इनवर्स x क्या है? ये है. सो sin x is defined for any real number of x. Okay, so the domain of the given function is C. So option C होगा. Clear? Next sum 8 नंबर सम क्या है? देखो f of x is equal to sin square ax by x square if x not is equal to 0 and 1 होगा when x is equal to 0. So then this function is continuous at the given point x is equal to 0. Then we have to find out the value of x. So what is the condition for a function which is to be continuous? So a function is said to be continuous if limit x tends to, यहाँ पर 0 है तो 0 प्लस मतलब right hand side limit of the function should be equal to the left hand side limit of the function, should be equal the value of the function at the given point f of 0. So limit x tends to 0 sin square ax x square. हम कंबाइन करके ये लिख सकते हैं, ये मतलब प्लस माइनस 0 है. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं. कुछ यहाँ पर x टेंस टू 0 मतलब क्या है? कुछ अगर दिया नहीं हुआ तो क्या होगा? either x approaches from right hand side towards the 0 or either x approaches from left hand side towards the 0. Okay, so limit x tends to 0 a square एडजस्ट कर लेते हैं to bring into the standard form of the limit. Okay, so sin square ax by a square x square. So a square, this is the properties of limit. So sin ax by ax whole square. So this is the standard form of the limit and the value of this form is 1. So a square. Since it is given that the function is continuous at the point x is equal to 0, so
So f of 0 means 1. So ये राइट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का वैल्यू, दोनों का ही वैल्यू. सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. So a is the right choice or right option of this question. Now the next sum of the first part, which is 9, if if such that r maps to r, क्या है f of x is equal to 2x minus sin x. ओके, ये है. देन हम लोग को बोलना चाहिए, हम लोग को निकालना पड़ेगा ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है ना इंक्रीजिंग फंक्शन है ना मैक्सिमम एट दिस एट द मैक्सिमम एट x is equal to pi by 2 or minimum at x is equal to 0. So first of all, to find out, to check the function whether it is increasing or decreasing, we have to differentiate on both sides of the given function. So differentiating on both sides with respect to x, what we will get? 2 minus cos x. So what we know? Range of cos x minus 1, cos x lies between minus 1 to plus 1. So multiplying by minus 1 or with 3 term. Okay, so 1 minus, तो sign change हो जाएगा, sign of inequation must be changed. So now adding 2, because we have to bring this portion in the middle term. Okay, so अगर 2 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा. So 1. So what we can see over here, we are seeing that this means f dash x, so which is this matlab, this means f dash x greater than 0, okay, or equal 0. So this indicate that the function is an increasing function. So the option is B. Next sum, if R be a relation defined A relate to B, A relate B, if and only if and AB belongs to R. So we have to find out whether it is reflexive or symmetric or transitive, or symmetric and transitive both. So first of all, for reflexive, for reflexibility, so A relate A, so A minus A क्या होगा? 0. So A minus A is 0, which does not obey the condition, so ये reflexive नहीं होगा. Clear? For symmetric, A mod of A minus B is equal to mod of B minus A. So A, what is symmetric relation? A relate B, then B relate A. So
it satisfies the given condition, the given inequation. Now, transitive, for transitive, suppose A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to 1 पकड़ लेते हैं. अगर A relate B and B relate C, then A relate C. This is the transitive relation. So यहाँ पर 1 relate 2 and 2 relate 1. So then 1 relate 1. Clear? So, but 1 minus 1 does not obey this condition. So एक transitive भी नहीं होगा और transitive नहीं होगा, symmetric, only symmetric होगा, but symmetric and transitive दोनों एक साथ नहीं हो सकता. So right option is B. ठीक है. Next sum. If f of x is equal to minus 2 x to the power 8, so we have to choose the correct statement. So now if we put minus x instead of x, then what we will get? Now is equal to, so minus, which is minus x, so minus x whole to the power 8 मतलब minus x ही होगा. ठीक ही है. So हाँ, so now अगर so minus अगर हाफ बैठा दे f of x is equal to minus x, putting x is equal to, we have to minus f of minus x is equal to minus x. ठीक है. So this, okay, minus 2 into minus half whole to the power 8. So minus 2 into 1 by 2 to the power 8 and half is equal to minus, sorry, okay, so to the power 8, so same ही आ रहा है. Clear? So what will be the option? D will be the right option. Okay. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, नहीं, डी विल बी राइट, नहीं, ऑप्शन नहीं होगा.
क्योंकि ये तो एफ ऑफ एक्स ही आ गया, तो एफ ऑफ माइनस हाफ ये भी तो नहीं होगा, सॉरी। हाँ, first of all, differentiating on both sides, what we will get? So minus 2 into x to the power 7. So minus 16 x to the power 7. So now f of minus x, f dash minus x is equal to minus 16. So minus प्लस हो जाएगा क्लियर। सो ये अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, सो ये माइनस हो गया प्लस 16। अब एफ ऑफ एफ डैश पहले हाफ बैठा दें तो क्या होगा, माइनस 8 इंटू 2 इंटू, हाँ ये हो जाएगा, एंड एफ डैश माइनस अगर हाफ बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 2 इंटू minus half whole to the power 7. So plus 8 into 2 into 2 to the power 7. So minus of minus ये मतलब ये लिख सकते हैं हम एफ डैश, ओके। सो ये क्या है, माइनस हाफ, सो दिस ऑप्शन, सो सी हो जाएगा, ठीक है क्लियर, ओके। ठीक से देखो, फिर बोल रहा हूं, देखो f of x is equal to minus 2 x to the power 8. So differentiating on both sides with respect to x, 2x into 8 into x to the power 7, ठीक है। अब माइनस हाफ बैठा दो, सो माइनस हाफ 2 इंटू 8 इंटू, सो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ होल टू द पावर 7। सो 2 इंटू इंटू माइनस 1 बाई 2 टू द पावर 7 एंड हाफ बैठा दो, फिर यहां पर 2 2
7, so minus 2 into 8 into so now so instead of this we can put minus f dash half. So क्या हुआ ना, f dash half, ओ नहीं होगा, f dash half, हाँ f dash half वो भी नहीं होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो क्या होगा, ऑड इवन फंक्शन से चेक करेंगे. क्लियर, ऑड इवन फंक्शन से हम लोग चेक करेंगे. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस दिस. सो द फंक्शन is said to be odd function if f of minus x is equal to minus f of x. Clear? If f of minus x is equal to minus f of x, this is mean odd function. So if f of minus x is equal to minus f of x, so function यहाँ पर है तो putting minus x instead of x, so minus 2 into so minus x to the power 8. Clear? So क्या हुआ, सो माइनस 8 आ गया मतलब f of x. क्लियर? So now and sorry even function and odd function क्या होगा, if f of minus x is equal to minus f of x even odd होगा और f of minus x is equal to f of x होगा तो odd even होगा. So now f of half is equal to f of minus f of हाफ हो जाएगा, बैठा दो ये वाला. ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस का कोई समस्या है इसमें? हाँ, यहाँ पर ऑप्शन का कुछ ठीक है, ये हम लोग बाद में देखते हैं ये क्वेश्चन, इसको कीप कर देते हैं. नेक्स्ट, अच्छा ये वाला फॉर अ फंक्शन f of x, फॉर अ फंक्शन f of x which of the following holds true. ये तो दिखाई जा रहा है a to b f of x dx is equal to upper limit integral of upper limit to b f of a plus b minus x dx. ये तो प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही होगा ये. क्लियर? नाउ ये वाला क्या है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. सो I इज इक्वल टू e to the power 9 of log x minus e to the power 8 into log x by e to the power 6 into log x minus e to the power 5 into log x पावर में है dx. सो देखो अगर a to the power log m to the base a इज होगा तो m हो जाएगा, ये log का फॉर्मूला है. क्लियर? सो नाउ e टू द पावर, और यहां पर बेस में कुछ नहीं है मतलब e है. ओके, सो log
सो 9 हो जाएगा log x टू द पावर 9 टू द बेस e माइनस log x to the power 8 to the base e 6, okay, 5 dx. So now ये क्या हो जाएगा ये वाला, so x to the power 9 minus x to the power 8 by x to the power 6 minus x to the power 5 dx. So now कॉमन ले लो, ऊपर से x to the power 8 कॉमन चला जाएगा, so x minus 1 by नीचे से x to the power 5 कॉमन ले लो, so x minus 1, so x minus 1 will be cancelled out, so x to the power 3 हो जाएगा x cube dx, so is equal to x to the power 4 by 4 is plus c, okay, so c will be the right option. Clear? Now next sum, ये भी इंटीग्रेशन का सम है, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, ओके. सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पहले ये वाला मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखे होगा, ठीक है. सो इसमें लेट a टू द पावर x को हम साइन थीटा पकड़ लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, सो a टू द पावर x इनटू log a टू द बेस e हो जाएगा इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ओके. सो नाउ a टू द पावर x 1 by log a to the base e into cos theta d theta, okay. So I is equal to, सब्स्टिट्यूट कर देंगे a टू द पावर x dx के जगह पे हम 1 by log a into cos theta d theta बैठा देंगे, क्लियर, एंड रूट ओवर ऑफ 1 माइनस a टू द पावर 2x मतलब a टू द पावर x होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस ये है, सो साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर. सो नाउ 1 बाई लॉग ए कांस्टेंट है, तो बाहर निकल आएगा cos थीटा डी थीटा बाई ये cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा cos से एलिमिनेट हो जाएगा, सो 1 बाई log ए इंटीग्रल ऑफ डी थीटा का मतलब 1 बाई log ए इंटू थीटा प्लस सी. थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा मतलब 1 बाई log ए इंटू साइन इनवर्स a टू द पावर x, ओके, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू a टू द पावर x, मैंने ये पहले से हम लोग एज्यूम कर लिए थे, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स a टू द पावर x हो जाएगा प्लस c. सो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा साइन इनवर्स a टू द पावर x बाय log a, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है. सो नाउ सेकंड सम, अ कॉइन इज टॉस्ड, ये प्रोबेबिलिटी की ऊपर है ये सम, दिस सम इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस्ड ऑन दिस सम इज गिवन ऑन द बेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी का सम है ये. अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, सो and a card is selected at random from a well shuffled pack of 52 cards. The probability of getting hit, so probability of getting hit
इज इक्वल टू हाफ. ओके, कॉइन का दो ही सरफेस होता है, हेड एंड टेल. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉइन का अगर सैंपल स्पेस क्या होता है, अगर इफ आई टॉस ऑफ अ कॉइन, वन कॉइन, देन व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? Tail comma head or head comma tail. So then the probability of, if we favor on head, then the probability of getting head is half. And face cut, there are 52 cards in a pack of cards. In a pack of cards there are 52 cards. So and in 52 cards we are getting 12 face card. Okay, we are getting 12 face card. So probability of getting face card, getting a face card is equal to 12 by 52. So 3 by 13. Now probability of getting both head on the coin and a face card from a pack from the pack. Okay, so the probability getting a head and a face is equal to half into 3 by 13. So 3 by 26 is the right option. 3 by 26 is the right option. 3 by 26 is the right option. Okay. So the next sum, a student tries to tie rope parallel to each other from one end of the wall to the other. One rope is along the vector 3i cap plus 15j cap plus 6k cap, and the other is along the vector 2i cap plus 10j cap plus lambda k cap. Then the value of lambda is. So here we can see specifically that two given vectors are parallel. So two given vectors are parallel. Then if two vectors are parallel, then what will be the what we will get? If two vectors are parallel, then 3i cap plus 15j cap plus 6k cap, ये वाला वेक्टर, and suppose ये वेक्टर को A से denote, this vector is denoted by A arrow sign, directed arrow sign B, ये वाला को B पकड़ लेते V वेक्टर. So if नहीं, since, because यहाँ पर मेंशन किया गया है दो वेक्टर पैरेलल होगा. So since A vector parallel B vector, then 3 by 2 is equal to 15 by 10 is equal to 6 by lambda. So 3 by 2 is equal to 6 by lambda, 2 हो जाएगा. So lambda is equal to 4. Okay. So D will be the right option. Now if
ये भी प्रोबेबिलिटी का सम है. सो P of A is equal to 1/5, P of B is equal to 3/5 and एक conditional probability है P of A by B is equal to 2/5. So now we have to find out P of A complement intersection B complement. So now P of A by B का मतलब क्या है? P of A intersection B by P of B. Clear? So P of वैल्यू बैठा देते हैं. P of A by B is equal to P of A intersection B by P of B मतलब 3/5. So P of A intersection B is equal to 2/5 into 3/5 is equal to 6/25. Now P of A union B का मतलब P of A plus P of B minus P of A intersection B. So P of A मतलब 1/5 plus P of B का मतलब 3/5 minus P of A intersection B का मतलब 6/25. So 25 5 plus 15 minus 6. So 14 by 25. Now P of A complement intersection B complement मतलब 1 minus P of A union B. Okay. So now 1 minus P of A union B का मतलब 14 by 25. So 25 minus 14 11 by 25. So 11 by 25. A is the right option. 11 by 25. If A mod of A vector plus B vector is equal to mod of A vector minus B vector for any two vectors, then A and B vector, what will be the A and B? What will be the relation between A and B vector? So squaring on both sides. So A vector plus B vector dot मतलब into so A square plus B square plus 2 into A vector dot B vector is equal to A square plus B square minus 2 into A vector dot B vector. So 4 into A vector dot B vector is equal to 0. So A vector dot B vector is equal to 0 मतलब orthogonal. Clear? Orthogonal vector. So A and B, two vectors are orthogonal vector. So A is the right option. So यहाँ पर साइन इन x इंटू एसर्शन में क्या दिया हुआ है? f of x इंटू साइन 1/x not is equal to x is continuous x is at x is equal to 0 and x is equal at x is equal to 0 is 0. So reason is when x tends to 0, sin 1/x, sin of 1/x is finite value between -1 to 1. Okay. So देखा जाए, suppose what do we know? The sin -1 से +1 तक इसका रेंज होता है. So अगर mod of x से मल्टीप्लाई कर देते हैं x एनी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, so x into
ये है, क्लियर। सो नाउ बाय स्क्वीजी थ्योरम, by squeezy theorem, what we will get? Limit x tends to 0, x sin 0, so f of 0, clear। A Squeezy theorem है। So according to Squeezy theorem, what we will get? When x tends to 0, sin sin of 1 by x is finite value between this, so 0 है, clear। So 0 आ गया, clear। So finite is a finite value between this and this, so 0 between this and this, so reason is true and assertion is also true। So यहाँ पर क्या होगा? Both reason and both assertion and reason are true, and reason R is the correct explanation of the assertion, so A option होगा, clear। reason, so reason R is the correct explanation of the assertion A, clear। So A is the option, right option। And 20 some number, root 3 by 2 इसका वैल्यू 0.866 चलता रहेगा। सो एंड साइन इन सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? ये होगा r-1, ये वाला, इसको छोड़ के बाकी सब रियल नंबर होगा। लेकिन देखा जाए ये तो साइन सेक इनवर्स, ये तो इसके अंदर में नहीं आता है, क्लियर। सो डज नॉट एग्जिस्ट, सो नल सेट होगा, ठीक है। क्योंकि फिर से बता रहा हूं, ये वैल्यू इसमें लाई कर रहा है, ठीक है, ये वैल्यू इसमें लाई कर रहा है, लेकिन ये उठा नहीं सकते। ये थंब क्या है? थंब किधर है? देखो तो, हाँ এটা সিলেক্ট, এই তো সিলেক্ট করলাম, এই একটু দেখি, এই সাইডে কোথায় আছে? হচ্ছে না, এনিওয়ে। सो देखो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू √3/2 का √3/2 का वैल्यू दिस, सो साइन इन सेक इनवर्स does not lie, second inverse the value of second inverse √3/2 does not lie between this, ओके। क्योंकि रीजन क्या है? रीजन है एक्सक्लूड्स, ये वाला नहीं होगा, डोमेन में नहीं आएगा, ये वाला डोमेन एक्सक्लूड्स, माने सेकंड वर्स √3/2 का डोमेन इसमें नहीं आएगा, इसको छोड़ के। सो क्लियर, लेकिन ये वाला आ रहा है वैल्यू सेकंड वर्स, सो ये नहीं होगा। सो assertion this is totally true, assertion A set of values second inverse √3/2 is null set, ठीक है, राइट चॉइस। एंड रीजन अगर ऐसा होगा तो वो भी सही है, यहाँ पर रीजन भी दिया है, दिखा नहीं जा रहा है, बस ये। थैंक यू, एंड दिस इज आवर